Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, you're staying safe, and you're staying healthy. Uh, Welcome to yet another session. Again, a brief, meaningful, hopefully insightful session. जहाँ पर I'm gonna just share some of the findings, some of the details that I've been able to get around this issue, this topic, which is making news. और आज का सेशन I'm gonna try हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हो, क्योंकि अब मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी बोलने लग गया हूँ, तो देन देर आर कुछ लोग ऐसे हैं जो पिंग करते हैं कि वरुण यू शुड कंटिन्यू टॉकिंग इन इंग्लिश एज वेल. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में डिटेल शेयर कर सकूँ. And I have some details, of course, which I would love to make sure everybody gets it, be it English, समझने वाले लोग हों, चाहे वो हिंदी वाले हों. So I want to cover everyone. So first of all, hello everyone. Welcome once again. I see. Let me just look at all of you. Hello David, Vanakkam, and hello Simiji. Hello Kumar, Satyam. Welcome, brother. Good to see you. Hello Ayush. Hey Judy. Hello Ramji. Jai Shri Ram. Jai Prabhu Ji. Hello everyone. Manjeet, Padamji, hello, and visiting my friend and Tracy. Hello to Tracy. I like your shirt color. Thank you, Judy. Thank you so much. And आगे से और green पहनेंगे हम. हालांकि somehow there was one time, I'll tell you, green never used to be my color for certain reason, but अभी के लिए थोड़ा life में color लाना पड़ता है, नहीं तो हम बूढ़े कहलाए जाते हैं. Anyway, so let me get directly into the topic, which is very important. Hello, Rishi ji. Hello, welcome. Good to see you. I'm so happy to see some of course, the not the old, but जो शुरुआत से मेरे साथ चलते आ रहे हैं वो लोग. Hello, Dheeraj. Jai Shri Ram. Few people who have been here since day one. Few who have joined me in the course of this journey, and of course some new people जो अभी आजकल मेरे साथ connect हुए हैं. So welcome you all, and thank you so much for all the love, support, and for all your blessings as well. अभी तक जो आ रही हैं WhatsApp or different social media platforms पे, I really appreciate that, and thank you so much, and that's what keeps me going. So let's get right into the topic. बहुत बात हो रही है for the last few weeks around this Patra Chawl. Patra Chawl जो कि एक chawl है. For people who don't understand chawl, chawl is basically like जैसे यूएस के अंदर अगर मैं या बाहर आउट ऑफ इंडिया की बात करूं, it's like a community. It could be called as a society, but इसके अंदर फर्क सिर्फ ये होता है जो मुझे पढ़ने पे ही पता चला, because I've myself not experienced one, कि इसमें जो services होती हैं. For example, there are common toilets, then there are sometimes common water source. तो chawl जो होता है, chawl is like a place where people not share, but share the same space. They stay in the same space. It's like a community. एक दूसरे को सब जानते हैं, एक दूसरे के साथ obviously भाईचारा भी होता है कुछ लोगों का arguments, discussions, fights भी होती हैं. For me, one of the prime examples, obviously unfortunately Bollywood से ही आते हैं. We've heard a lot about Jackie Shroff and his initial life in chawl, or Govinda living in a chawl. So all these people started off when they were nobody. They all stayed in a chawl. और chawl के अंदर ये होता है कि you sometimes get a room and you share amongst many people so that the rent is split. So उससे भी होता है. Plus then there are family. Exactly, single room houses with common toilets. Yes. And sometimes common services as well. When I say services, these could be water, के tap होते हैं for the whole chawl, जहाँ से आपको रोज पानी भर के लाना होता है. Sometimes you get, water in your house as well, but mostly you have like a common water source. Anyways, enough on the chawl. So chawl is basically, वहाँ पर तो ये जो पत्रा chawl था, ये एक ऐसी जगह थी
जिसको एक्चुअल दूसरा नाम जो इसका था वो सिद्धार्थ नगर था। तो इस सिद्धार्थ नगर में, इस चौल में कोई 672 फैमिलीज रहती थी। और ये प्राइम लोकेशन पे है, सो इट वाज ऑलवेज इन द आईज ऑफ एवरीबडी, स्पेशली द बिजनेस माइंडेड पीपल, रियल्टर्स एंड एज वेल एज बिल्डर्स। तो ये जो 672 फैमिलीज रहती थी, एग्जैक्टली, हेरा फेरी इज अ गुड एग्जाम्पल। Hera Feeder bhi, all these Akshay Kumars and all these people were also staying in a chawl. Or kuch aise scenes bhi hain where people are fighting for water and all that stuff. So, all right, going back to the 672 families jo rehti thi is roughly about 47 acre ke land mass pe. So 47 acre ke land mass pe there was this Patra Chawl, which was also called as Siddharth Nagar. So these 672 people were living a life, good life till 2007. 2007 ke baad bhi they had a good life. But 2007 में there was a contract that got initiated. कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको बेसिकली एक ब्लैंकेट जो दिया गया या एक कवर अप जो दिया गया उसको बोला गया रीडेवलपमेंट का। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन, स्पेशली हमारी कंट्री में। जब किसी चीज को गफला करना होता है तो या तो उसको रीडेवलपमेंट करते हैं या उसको एक न्यू लुक देने के लिए करते हैं एंड व्हाट नॉट। चार्ल्स आर देन स्लम्स। Yeah. Who said it is not slums? Definitely it is not slums. Slums are different. Chawls are different. Chawls mein to, there are people who, it's more about affordability as well. So let's not, make it a little wrong. Yep. Sanjay Dutt in Vastav also was in a chawl. So those are good examples. Anyway, so going back. So ये एक रीडेवलपमेंट स्कैम इसको मैं बोलूँगा। रीडेवलपमेंट स्कैम इसलिए क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड किया, इसके अंदर दो पार्टीज थी बेसिकली प्राइमरीली। वन वाज द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म महाड़ा कहेंगे हम। सो महाड़ा formed a committee and they signed a contract. कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया गया? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये दो कंपनीज का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जहां पर महाड़ा, विच इज अ गवर्नमेंट एजेंसी, ने GSCPL उनको कहा कि बॉस ये रहा 47 एकड़, इस 672 फैमिलीज रहती हैं। वी गिव यू दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड हाउसेस, अपार्टमेंट्स, हाई राइज जितने भी फ्लोर के, मेक अपार्टमेंट्स, एंड जब वो अपार्टमेंट्स बन जाएं उसमें से 672 अपार्टमेंट्स जो होंगे they will have to be given to these people. The residents who are staying in that chawl will have to be re-inhabited by those apartments. On top of that, the additional apartments जो आप बनाएंगे उसको हम बेचेंगे। टोटल जो आपस में जो डील हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ between the government agency as well as this private limited company was to build roughly about 3,000 flats. So 3,000 flats बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उस 3,000 फ्लैट्स में से 672 flats were completely taken away, well, had to be given to these people who were staying in that chawl. So अगर आप जैसे हो, मेरे जैसा हो, again, let me just put it my name. If I was one of the residents of this chawl, और chawl की थोड़ी कंडीशन जो होती है, it's not like very great like apartments, कोई high end नहीं होते। But if somebody is offering me, मेरे पास आके कोई कहता है, what, हम आपको एक ऐसी जगह पर अभी ठहराएंगे जहां पर आपको obviously we'll pay for it, we will take care of your rent, and then once we restructure this, once we rebuild this particular complex and we build a new apartment, we will give you one brand new apartment to live in. जब तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक आप यहाँ रहें, इसका किराया हम देंगे। तो आई विल डेफिनेटली जंप ऑन इट। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कि यार तो बहुत बढ़िया बात हो गई। एक तो मैं एक ऐसे पुराने और नॉट इतनी सारी फैसिलिटीज ना होने वाली जगह से निकल के मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर ऑब्वियसली मैं टेम्पररी अकोमोडेट हो रहा हूँ, प्लस
उसका रेंट भी नहीं मुझे पे करना पड़ रहा, जो कि रेंट भी ये लोग पे करेंगे, तो मैं तो भाग भाग के जाऊंगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन 2007 व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड. द पीपल लिटरली काइंड ऑफ वर हैप्पी कि चलो यार, दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन. 2007 से लेके 2014 तक 7 साल कुछ ना कुछ धंधलेबाजी गेम चलती रही, जो भी चलता रहा कि कंस्ट्रक्शन होगा, हो रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना एंड ऑल दैट स्टफ. 2014 के अंदर सडनली रेंट पे करना उन लोगों का बंद कर दिया. नाउ बिटवीन 2007 and 2014 what other things happened and which is very important to know. 2007 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था दोनों ने, उसके अंदर GACPL जो कि प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी थी, what they did was they gave a contract to 9 other companies. इन लोगों ने उसको स्प्लिट करके 9 अदर कंपनी को बेच दी जगह. सो 47 एकड़ में से स्प्लिट किए गए और उसमें से कुछ जगह 9 कंपनीज को स्प्लिट कर दी गई, और उन 9 कंपनी से जो पैसा लिया गया, जो इसको जगह को बेचने के बाद मिला, दैट वाज अराउंड 901 करोड़, 901 करोड़ रुपए लिए गए. जब ये 901 करोड़ रुपए ले लिए गए और उनको जगह दे दी गई, उनको ये कहा गया बेचने के बाद कि आप लोग यहां पर ये घर बनाए, कंस्ट्रक्ट करें. तो वो 9 कंपनीज ऑब्वियसली उनको तो पैसा उन्होंने खरीद ली जगह, वो बनाएंगे, नई तरीके से बनाएंगे, और वो जो बाकी होंगे जो वो बेच सकते हैं वो अपने हिसाब से बेच के उसके अंदर पैसा कमाएंगे. ना 47 में से जो एक कुछ पार्ट जो महाड़ा जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, उस वाले पार्ट को भी महाड़ा ने एक हाउसिंग ऑफर बना के शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने दिया द मेडोज. सो बेसिकली उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हमने 47 एकड़ में से एक मेजर चंक हमने GACPL को दे दिया. जो चंक हमारे पास है उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और हम उसको बेचेंगे अलग. तो इट वाज अ ग्रेट प्लान, आई वुड से. जिसका भी प्लान था बहुत अच्छा सोचा हुआ प्लान था, बट वो प्लान ना सक्सेसफुल हुआ. वो प्लान और ही इश्यूज में चला गया ना. वो जो बेचा गया था, जिसको इन्होंने खुद प्रमोट किया, उसके ऊपर गवर्नमेंट एजेंसी महाड़ा ने खुद भी फंडिंग उठानी शुरू कर दी कि हम अपार्टमेंट बेचेंगे. सो दे स्टार्टेड प्री सेलिंग इवन बिफोर इट वाज कंस्ट्रक्टेड. आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मैं भी सुनता था आज से कुछ साल पहले. यहाँ US में बहुत मेरे फ्रेंड्स थे जो बॉम्बे से, पुणे से और इंडिया में बहुत जगहों से जहां से आते थे. वो लोग ये करते थे कि घर बनने से पहले ही देयर वाज सम लोन अमाउंट दैट वाज टेकन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव बायर्स, और उनको कहा जाता था, एक कमिटमेंट दिया जाता था कि इस साल तक आपको फुली कंस्ट्रक्टेड घर दे दिया जाएगा. तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये करते थे, यहाँ से पैसे भेजते थे अपनी फैमिली को, वो फैमिली उसमें इन्वेस्ट कर देती थी. वो बाहर से वेट करते थे कि कब ये घर बनेगा, कब ये घर खड़ा होगा और कब हमें इसकी ऑक्यूपेंसी मिलेगी. तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर लोग ये इन्वेस्टमेंट करते थे और बहुत लोगों ने की. वही केस हुआ यहाँ पर. तो इन्होंने 47 एकड़ में से मेजर चंक बेच दिया, वो जो प्राइवेट कंपनी को, जिन्होंने आगे उसको बेच दिया 9 डिफरेंट और कंपनीज को. खुद इन्होंने जो किया वो भी इन्होंने घर बेचने के वो द मेडोज जो शुरू किया उसको शुरू किया. तो इन्होंने उन घरों को भी बेचना शुरू कर दिया बनने से पहले. सो ऑल इन ऑल दिस टर्न्ड आउट टू बी 900 करोड़ एक, 300 करोड़ एक. सो क्लोज टू अबाउट 1100-1200 करोड़ का इन्होंने फंडिंग उठा ली. बहुत बढ़िया प्लान, बहुत ही बढ़िया प्लान. इतना पैसा उठा लिया, सब कुछ हो गया, वो पैसा गया कहाँ? कंस्ट्रक्शन तो हुई नहीं. एक बड़ा स्ट्रक्चर सा खड़ा कर दिया गया, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हुए. 7 साल तक ऑब्वियसली जो लोग वहां के रेजिडेंट्स थे चौल के,
वो भी रहते रहे, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज़ उनकी तो पेमेंट हो रही थी, उनका रहना फ्री हो गया था, तो उनको तो और अच्छा लग रहा था, उनके हिसाब से तो साथ क्या 20 साल लगते तो भी हम चलते रहते। 2014 में हुआ कांड, जब रेंट पे करना उन्होंने बंद कर दिया। जैसे ही वो रेंट पे करना बंद कर दिया, ऑब्वियसली अगर मैं होऊँगा तो मैं भी गुस्से में आऊँगा, मुझे भी होगा कि क्या हुआ? एक तरफ से हमें प्रॉमिस किया गया था अगले कुछ सालों में घर मिल जाएगा, घर भी नहीं मिला, उसके अलावा जो रेंट जा रहा था, वो रेंट भी हमारा बंद हो गया, तो ऑब्वियसली मैं इश्यू मचाऊँगा। उसी टाइम के अराउंड 2014 में ही 2014-15 के अराउंड जो मुसीबत खड़ी हुई वो ये हुई कि गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो फडणवीस जी आए और उन्होंने देखा जी ये क्या हो रहा है। लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, लोग बहुत इशू मचा रहे हैं, उनको घरों की ज़रूरत है, तो उन्होंने सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना दोबारा शुरू किया, उन्होंने कमिटी बनाई, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है और उसके हिसाब से जब उन्होंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया, फडणवीस ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, दिस इज नॉट गोना वर्क आउट, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत सारा पैसा है, लेट्स कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट नाउ। मीनवाइल ही स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन कि पहले तो इन्वेस्टिगेट भी करो कि ये पैसा कहाँ है, कहाँ गया, कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुई, एंड अ लॉट ऑफ अदर फाइंडिंग्स दे वांटेड टू डिस्कवर कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। 2014 से अराउंड जब से गवर्नमेंट चेंज हुई से 2018 तक देवर फाइंडिंग डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में तो क्या क्या निकलता है, एक दूसरे को अंडर द टेबल कुछ ना कुछ खिला के ये करके वो करके होता है, बट 2018 में फाइनली दे डिसाइडेड वी आर गोना एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये महाड़ा और वो जो GACPL का जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हेन दैट कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैंसल्ड, सबसे पहले जो जिसको इशू होगा और ऑब्वियसली बनता है, वर दोज 9 कंपनीज जिन्होंने मिलकर कोई 900 करोड़ में जमीन खरीदी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट में इनका पार्ट बने। उन्होंने जाके मुंबई हाई कोर्ट में अपील डाल दी कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, वी हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, वी हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम एफर्ट, और ये इस तरह से गवर्नमेंट हमें नहीं कर सकती। तो वो 9 डेवलपर्स ने वो जो मुंबई हाई कोर्ट में अपील डाली, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से द होल थिंग द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फिनिश्ड। दिस वाज 2018। नाउ जब ये चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू हो रही है एंड कॉन्ट्रैक्ट की लिटिगेशन चल रही है एंड व्हाट नॉट, 2019 में फिर से गेम बदल गई। 2019 के अंदर द गवर्नमेंट चेंज्ड अगेन। अब वापस आ गए उद्धव ठाकरे पावर में, सेम वही लोग, सेम उन्होंने देखा कि अभी भी लोग जो हैं, जो चौल के लोग हैं, वो अभी भी बहुत इश्यूज मचा रहे हैं, अभी भी वो घर के बगैर हैं, अभी भी उनके साथ they are gonna get onto streets because 2007 से 2019 हो गया है और अभी तक उनको ना घर मिला है, ना उनको रहने के लिए जो घरों की रेंट दे रहे थे, ना वो दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दे 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 स्टार्टेड शोइंग देयर एंगर। तो उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने उस टाइम पे एक और कमिटी बनाई और उस कमिटी को सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया पहले कि लेट्स फिगर आउट अ वे जिस हिसाब से हम वो जो 672 लोग हैं उनको हम रिहैबिटेट कर सके, उनको घर दे सके, ताकि वो लोग कम से कम शोर मचाना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाना, उनके पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो भी करना वो बंद करें, बिकॉज इट वाज लीडिंग देम टू अ वेरी वेरी बैड स्टेट। 672 फैमिलीज को इनहैबिटेट करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, किसी को किसी जगह पर घर देना फ्री फंड में इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट अ वे, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं उनको मिला किस तरह से वो करें, दे वर स्टिल फिगरिंग आउट। और अनफॉर्चुनेटली ये फिगर आउट करने के अंदर अभी रिसेंटली
गवर्नमेंट फिर पलट गई। अब जब गवर्नमेंट पलट गई तो गवर्नमेंट पलटने के बाद ईडी, जो कि वैसे भी बहुत एक्टिव था चीजों को देखने के लिए, दे स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि ये चल क्या रहा है बॉस, कहाँ से आया पैसा, इतना पैसा था कहाँ गया। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी ईडी ने, the first red flag that showed up was द प्राइवेट कंपनी जो GACPL है, उसके उन्होंने बोर्ड ऑफ मेंबर जो मेंबर्स थे उनके बोर्ड में, उनके नाम देखने शुरू किए। उसके अंदर एक नाम आया जो था प्रवीण राउत। हालांकि सेम लास्ट नेम है, अभी तक मुझे ये तो नहीं पता कि फैमिली या ब्लड रिलेशन है, बट ही वाज अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ संजय राउत। तो प्रवीण रावत, it was a very close buddy, ally, complice of संजय राउत। उनका नाम जब देखा उन्होंने, तो फिर उन्होंने उनकी बुक्स वगैरह, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल सब देखनी शुरू करी। जब उन्होंने देखा कि ये मिस्टर प्रवीण रावत कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं संजय राउत के अकाउंट में, 2-3 करोड़ ट्रांसफर हुए, कुछ लाख वंस इन अ वाइल ट्रांसफर हुए। उसके बाद द सेकेंड transaction that raised the red alert was this Praveen Rawat's wife, Madhuri Rawat. उन्होंने कोई 87 लाख ट्रांसफर किए वर्षा रावत के अकाउंट में, जो कि संजय राउत की वाइफ है। और वो संजय राउत की वाइफ जो वर्षा रावत ने 87 लाख कोई दादर, कोई 2-3 जगहों पर और घर खरीदने के लिए, कुछ फ्लैट्स खरीदे, उसके लिए वो ट्रांसफर हुए। तो बेसिकली द मनी ट्रेल स्टार्टेड फ्रॉम प्रवीण रावत, संजय रावत, प्रवीण रावत टू हिज वाइफ माधुरी रावत टू वर्षा रावत, एंड देन मेनी मोर सच चेन्स वो निकल के आई जो संजय रावत से रिलेटेड थी। तो ये सारी जो जो कॉबवेब्स बने हुए थे इतने सारे, उसके अंदर ईडी को ऑब्वियसली रेड अलर्ट लगा कि ये बॉस सारा का सारा पैसा ना कंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, ना कहीं, ये 1000+ करोड़ कहीं ना कहीं गफलेबाजी में इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये कहाँ जा रहा है और ये पैसा यूज कहाँ हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है, घर, प्रॉपर्टीज। संजय रावत ने बहुत सारे अपने लोगों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टियां रखी, उनके नाम पे ली। ऐसे ऐसी न्यूज आ रही है, ऐसे ऐसे अपडेट सुनने को मिल रहे हैं कि उनके सर्वेंट्स, हेल्पर्स, गरीबों के नाम पे भी 10-10 घर, 4-4, 6-6 घर खरीदे गए हैं। जो लोग एक टाइम की रोटी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके नाम पे संजय रावत ने उनके नाम पे घर रखे हुए हैं, सो दैट वो रडार में ना आए। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, ईडी इज नॉट लाइक, वो बच्चों का खेल नहीं करती। तो that is the reason why Sanjay Raut is now arrested and is in custody, जिस वजह से money laundering, exactly. So this is the entire kind of uh, you know web of lies, web of fake things that this Sanjay Raut has been doing. और वी नो डॉक्टर पाटकर ने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया अदरवाइज भी उन्होंने शेयर की हैं। पोटेंशियली देयर वर सम प्रॉपर्टीज, आई थिंक दैट दिस गाय पुट आर ऑन हर नेम एज वेल। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बिजनेसेस हैं जो संजय रावत ने बहुत सारे लोगों को एक तरह से, जिनको वो समझता था उसके क्लोज अलाय हैं, उनके नाम पे रखी हैं लेके। आप खुद सोच सकते हैं, अराउंड 1000 करोड़, 1000 में से अगर मैं लेके चलूं, इवन 1% भी इज मोर देन इनफ फॉर पीपल लाइक हिम। पर 1% तो इनका कुछ होता नहीं है। तो आई एम श्योर 200-300 करोड़ वर्थ ऑफ धांधलेबाजी तो सीधा ये छोटे लोगों के नाम पे ही प्रॉपर्टीज लेके इसने रखी होगी। 87 लाख के फ्लैट्स, 100 करोड़ के, कितने सारी इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई। अगर आपको याद हो,
मोहित भारतीय जो है, उन्होंने कुछ पोटलियां दिखाई थी आज से कुछ महीनों पहले। वो रेड कलर की जो पोटलियां थी, उसमें ज्यादातर इनके वही काले चिट्ठे थे। इनके भी वही घरों के एड्रेसेस, लोकेशंस, प्रॉपर्टीज के नाम, बेनामी प्रॉपर्टीज के नाम, जो इन्होंने खरीदे इस धांधलेबाजी करने से। सो दिस इज व्हाट द एंटायर Patra Chawl scam was and is right now going on, जिसके अंदर इतना पैसा हम सबका, टैक्स पेयर्स का, और गवर्नमेंट से जो भी मिला होगा, प्लस वो लोग जो उस चौल में रहते थे, द 672 पीपल, फैमिलीज, दे आर द ones who have been suffering. 2000, अगर इसको वैसे देखा जाए तो यस 2007 से है, बट देव बीन सफरिंग सिंस 2014, और आज 2022 हो चुका है। तो ये पिछले 8-10 सालों से, और ऑब्वियसली अगर देखा जाए 2007 से देखा जाए, इतने सालों से पहले तो उनको उनके घर से निकाला गया, ठीक है, उनको रेंट दिया गया, बट 2014 के बाद से they have been on street fighting for their right, fighting for their home, fighting for the money that they deserve. बट ये सारे पॉलिटिशियंस मिलजुल के सब कुछ खा पी चुके हैं, सब कुछ खत्म कर चुके हैं, और इस वजह से भी ईडी ने इनको कस्टडी में रखा, बिकॉज कस्टडी पहले रिमांड में लिया था। सुनने को ये आया है, इंटरनल जो बातें हुई हैं, दिस गाय संजय रावत वाज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। वो जो हमने देखा है, द वे ही बिहेव्स इन पब्लिक, इवन दो इनका एक पोजीशन भी थी शिवसेना में, और अदरवाइज भी ही थिंक्स हाईली ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत प्राउड दिखाते भी हैं और हरकतें भी ऐसी करते हैं। दिस गाय डिड नॉट talk to them nicely, did not give them what they wanted, और वो the discussions जो investigation हो रही थी उसके अंदर he was not behaving properly, जिस वजह से भी ईडी ने उस रिमांड को custodial रिमांड में चेंज किया, and then he got arrested. End of the day, he deserves to be there. End of the day, everything will come out, because ये जितने भी इन्होंने ये चोरी के घर, पैसे खा के जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जो चीजें बनाई हैं, I am sure all of it will definitely come out, and most of them have already come out. And बाकी जो Dr. Patkar and many more such people will come out openly, and they will expose the entire modus operandi of this man. Unfortunately for him, जो ये झुकेगा नहीं और whatever बकवास सब कुछ करता था, चाहे वो सुशांत से रिलेटेड, इसने तो सुशांत के फादर तक के लिए बोल दिया था, फैमिली तक के लिए बोल दिया था। Now this is his karma which has caught up. He will definitely at least for this kind of money, he will be behind bars. वो जो सलीम जावेद की एक जोड़ी बताई थी मोहित भाई ने, वो सलीम जावेद की जोड़ी is going pretty strong now. Both of them are in jail. Both of them are gonna वो कहते हैं ना, चक्की piecing and piecing and piecing, because now it really does not matter. It really does not matter whether you're a politician, whether you have power. Karma has started taking care of all of these people. And so this is the entire Patra Chawl scam in a nutshell, जो मैं खुद भी समझना चाहता था, और बहुत सारे लोग क्वेश्चंस जो कर रहे थे जो चैट पे या व्हाट्सएप पे, उनको भी बताने के लिए आई हैड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ फाइंडिंग, एंड वेरी सिंपल टर्म्स में एक गवर्नमेंट एजेंसी और एक प्राइवेट एजेंसी का जो टाई अप हुआ, उसके अंदर बहुत पैसा खाया गया, और उस प्राइवेट फर्म को भी कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आई एम श्योर वो ईडी वो भी फाइंड करेगा, बिकॉज जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो जो प्राइवेट कंपनी है, जो भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में या उसके बोर्ड में देयर कैन नॉट बी अ डायरेक्ट फैमिली मेंबर। तो अगर ऐसा तुम कुछ करते हो जहां तुम्हारी एफिलिएशन है, यस एज फ्रेंड्स एनीबडी कैन बी देयर, बट वो भी आई एम श्योर ईडी फाइंड आउट करेगी कि कहीं
वो कॉन्ट्रैक्ट भी जानबूझ के तो नहीं जिए सीपीएल को दिया गया, सो दैट ऑल दिस मनी कुड बी ईटन अवे। एंड दिस इज द इंटायर पत्रा चौल स्कैम, जो कि एक एक अच्छी कम्युनिटी सोसाइटी में नॉर्मल लोग अपनी जो लाइफ जी रहे थे उस तरह से चल रही थी। बट due to the greed of certain people, certain politicians, and certain, of course, builders, इस बंदे ने सारा पैसा खाने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट एस्केप। बचेगा तो कोई भी नहीं, मैं आप इन द लास्ट 2 years we've seen how much dirt has come out, how much गंदगी बाहर आ चुकी है, and it continues to happen even more. So I somehow feel, and I've started I've been waiting for her to. Okay. All right. So I will. This is. I've just shared the StreamYard link. अगर कोई आके बात करना चाहता है, I just wanted to kind of share the entire this scam, Patra Chawl scam. Uh, Unfortunately, जो हमारी एजेंसीज हैं, they will definitely take some time, but the good part is, since a lot of dirt has come out, and there are people like Dr. Patkar, there are मोहित भाई ने भी बताया था, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो उनके पास हैं। आई एम श्योर ही इज ऑलरेडी सबमिटेड। तो ये फर्क है कुछ लोगों का, जो कुछ होते हैं जो लाउड माउथ होते हैं, बाहर जाके बेसिकली सिर्फ ढोल पीटते हैं, बट एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वर्सेस व्हाट मोहित भाई हैड सेड कि इनको तो हम एक्सपोज करेंगे। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, वेयर ही हैज बीन रॉयली एक्सपोज्ड, हिज डिटेल्स आर आउट, हिज स्कैम इज आउट, एंड यहाँ से अब इसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। सो आई एम रियली हैप्पी, एंड इट लुक्स रियली रियली promising जो ईडी कर रहा है, because the way this guy has been shitting, just like वो चिचा जान जब शुरू हुए थे, he's also behind bars, and this guy is so सलीम जावेद दोनों अब जेल में बैठे हैं। आई एम श्योर दे आर इन द सेम सेल, इफ नॉट आसपास ही होंगे, एक दूसरे को समझा रहे होंगे कि बॉस तूने ये क्यों किया और मैंने ऐसा क्यों किया, एंड दे विल rot in hell for a very very long time. So let's hope for the very best कि इस इन्वेस्टिगेशन से और भी चीज़ें बाहर निकल के आएँ, और भी बहुत सारे काले धंधे बाहर निकल के आए इनके, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही खाना नहीं। आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ अदर कनेक्शंस, जैसे चिचा जान का निकल के आया था कि उन उन बॉम्बे ब्लास्ट वाले लोगों को तक सपोर्ट करने का किया गया था, तो यहाँ पर इसका भी कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन निकल के आएगा ही। सो playing Ludo. All right. So that's pretty much what I wanted to talk tonight. जैसे मैंने कहा था, going forward we're going to be very focused, very to the point. Sessions भी होंगे, meaningful होंगे, जब ज़रूरत होगी तब हम करेंगे। And this is one topic which a lot of people have been requesting कि इसके बारे में थोड़ा clarity दो, कि क्या है क्या overall what is the scam. So I hope you all got the gist of it, and if you still have questions, please comments में ज़रूर डालें, and I will be reading all your comments. I will be addressing all those questions. And of course, the second part of this is we've done a fantastic job on boycott लाल सिंह चड्ढा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत गालियां भी निकाल रहे हैं, which is fine, and they are questioning me sarcastically, which is fine. End of the day, we will continue to boycott Bollywood. We'll continue to boycott those elements who have been either anti-India, anti-national, या हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जिन्होंने बोला। सो चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, मिस्टर परफेक्शन खान, या वो हो खिलाड़ी कुमार, इन सब की मूवीज हम डेफिनेटली वी गोना कंटिन्यू टू बॉयकॉट, एंड लेट्स कंटिन्यू टू रोर फॉर सुशांत, बिकॉज सुशांत ही है which I feel is doing all this magic. He is the one who is doing all these things. एक फोर्स की तरह वो चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो पुलिस कॉप्स कोई भी हो, चाहे वो बॉलीवुड के ही लोग हों, all of them are being exposed royally. So thanks to Sushant for
doing all this, and more power to Sushant's family who is fighting this like fierce lions. So thank you so much. I hope this was a meaningful session, and I hope I was able to justify, and explain what the whole scam is all about. We'll do more of such meaningful sessions. We'll do more of such logical sessions, and let's continue to stand for truth, for facts, and let's keep on exposing people like these. All right, before I end, I see Chetali join, so I definitely will take her. Hello, Chetali. How are you? Hi Varun, good morning. This is morning in Good morning. India. Yeah, first of all, tell me, my voice is audible? Yes. Okay. So Varun, I know the topic is about a different one, but since you was talking about boycotting Lal Singh Chadda, I want to talk some of the points about that topic. So can I go Sure. ahead? Please. Yes, absolutely. Okay. Yeah, Varun, actually yesterday I was going through with an article that this boycott Bollywood things, whatever is happening, it's not like a overnight procedure, right? There are different social media platform, who worked a lot to make these things happen. And yesterday, when you joined a session with us, I have conveyed few of the points. So यहाँ पे भी मैं कुछ points बोलना चाहूंगी. Sure. After 14 June, the campaign which we have started, boycotting Bollywood, and successfully we have boycotted, many of the films. We know pretty well the downfall of the industry, right? So, definitely the campaign started in Twitter itself. Eventually, it spreaded on Facebook and the other social media platform. But yes, once again, I'll tell the same thing. Uh, y- see, Bollywood is an industry. It's not started before 5 to 6 years back. It's the industry started long years back. People was habituated to watch the films and all, but when you are conveying anything about boycotting something, you have to put your facts very clear. So to putting the facts very clear, I if you tweet that thing, we need to boycott Bollywood and boycott any kind of movie. Reading our tweets, definitely it worked. It trends so well. Twitter is a very powerful media, but there is a huge number of people, a larger scale of audience. They will always look forward. They will have the question in their mind: why we want to boycott the film, but why we should boycott the film? So in that case, through all this live show like you do, uh, it's very important that you are explaining the fact, and you are conveying the message to a larger scale of people worldwide, to why to boycott them, and eventually we are successfully boycotting the film. So today's date, if boycott Bollywood campaign is working properly, successfully, we have boycotted many of the films. The downfall has started, and in the downfall of Bollywood industry is certain as well. So definitely, the platform like you run, and some few of the others run. This platform are also so very important. That is the point I wanted to convey, Varun, because in our country, or in the other country as well, everybody is not super active in Twitter, right? We can't expect that people Right. are super active in Twitter, and just watching the trend or watching few of the tweets, people will be going ahead with the flow. Right. People always need an explanation. You have to represent the fact that why they need to boycott that, right? And explaining the fact, it's not possible through Twitter. Definitely, you have to represent them properly, hosting a proper show, maybe 1 to 1.5 hour, and the last day session was that about you was doing about Lal Singh Chadda. We know that, right, Varun?
Many community has also came forward. They have raised their voice, especially one person's video went viral. He's a spokesperson of Sikh community. He have spoken so well. So the thing is that it was a clip of 4 to 5 minutes which we came across in the Twitter. But when Right. we went in the live show, if I'm being a neutral person, I don't know anything about why to boycott that film or why we're boycotting any movie. When I'm watching a show of 1 hour, things are properly get explained there. So I have the fact in the mind that yeah, the person is talking logical, he's making sense. So I need to boycott. So eventually, the campaign is getting impactful and the campaign is working. So somehow, if the boycott Bollywood campaign is working and it's making the downfall of Bollywood industry, definitely platform like yours one, also have a very huge importance in it. That is what I wanted to say, because I was going through an article last night that how other social media also you know uh, working behind it, how they are making people explaining the fact on that time of the first one the thought of your platform came in our mind. And Varun, in Twitter specifically I would like to speak because I'm active over there only. Uh, we can only talk with people through replies, right? We can't engage our real time audiences to interact with them. But in such kind of a live platform, you can you people will come to your platform, you can engage with all the real time audiences, you can give them a scope that come over there and clarify your queries so that you can take your decision. And this is happening successfully, and successfully we are running this campaign, this boycott Bollywood is happening. That is the importance of such kind of a platform, and I think that is the importance of for such kind of a show which you're hosting. Thank So you. Thank you so much, Itali. That is a lot of support and encouragement for sure. But more importantly, you're spot on that it is very true. Not everyone is on all the social media platforms. कुछ लोग ट्विटर पे हैं, कुछ लोग फेसबुक पे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे हैं. So it is very important that we come to a common ground with all of these people. कल का मैं यही एग्जांपल दे रहा था एक्चुअली परसों जब हमने सेशन किया था बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के लिए. There were people who I thought were well aware of everything, बट फेसबुक पे उन्होंने कमेंट किए कि क्यों क्यों कर रहे हो, आमिर खान की मूवी को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो. एंड वी गेव देम अ रिस्पॉन्स वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी ग्रेसफुली, दैट विद फैक्ट्स कि ये देखो ये सब कुछ ये लोग करते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने पहले की हैं. डजंट मैटर, ऐसा तो अक्षय कुमार ने भी हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लीडर्स और सबको बहुत अप्रिशिएट किया है, उनके ऊपर मूवीज बनाई हैं, दिखाने के लिए कई बार भगवान के पैरों में भी पड़े हैं और कितना कुछ. बट एक्चुअल में क्या करते हैं, वी रियली नीड टू ब्रिंग दैट टू द फोर फ्रंट. एंड आई थिंक not only me, I think there are more people who are doing this, and I think it is very important कि हम सब मिलके ये करते रहें and bring the facts out. Let's not create new stories. Let's not create any false narratives. Let's not create any new, concepts and whatever nonsense that others do. Let's bring the facts out. Let people decide. I cannot force you. I cannot force Akash Veer ji. मैं देख रहा हूँ Rishi, every individual that I see on the screen. I cannot force you to do certain thing, but I can always bring the facts out and let you guys make your own decision कि यार ये क्या हुआ, हमने ये कैसे नहीं देखा, क्यों नहीं हमने इसको उस टाइम पे रोका. So that's what my role is, that's what my responsibility is, and I'll continue it till I can. And I just want to make sure, जैसे कर्नल आरडीएक्स बहुत बार बोलते थे, awakening of Indian people, awakening of our society. That's what we have to focus on, and that's what I'm focusing on. Okay, let's awaken. And I have been, culprit to all of this as well. So, पहले तो मैं ही awaken होना मेरा ही बहुत जरूरी था, and I'm still learning. As I learn, I want to make sure I spread the same, knowledge
and information that I get, तभी मैं ये आज का जो सेशन था पत्र चौल के ऊपर, पहले मुझे पता करना था कि ये स्कैम है क्या, because the people who were asking me, I wanted to explain it to them in very simple language, and I hope I've been able to do it today. Yeah, so rightly said, Varun. And about the Sushant Singh movement, also I want to say you few things. I would like to say you. देखिए Sure. movement के लिए ट्रेंड हो रहा है from past 2 years. अभी Twitter trends it happens, सबको को पता है. Trends पे जाके भी what we can do, we can check, we can came across only few of the tweets, right? जहाँ पे हम लोग के पास limited words रहता है चीजों को explain करने के लिए. If you go to Facebook, in the all the Facebook groups and all, वहां पे भी आपको सुशांत की वीडियोस मिलेंगे. शायद कुछ आर्टिकल्स मिल जाए, राइट? बट 2 साल से ये जो मूवमेंट चल रहा है, द सेशन विच यू हैव कंडक्टेड, आई हैव sometimes when I get time I go through your some of the old videos about the movement which you have conducted. एक एक 1.5 घंटे का शो करके जब भी कोई पॉइंट्स आया, न्यूज आया, you have conveyed things to the a larger number of audiences globally. So कोई भी जब मूवमेंट चलता है और या कोई भी इश्यूज होता है on that time it's very important कि you need to explain things to people. And if the movement is running today as well, in global scale, if it's for the Twitter trend, then definitely it's for you people as well, the way you people are running the platform and presenting the fact. क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती का इशू हुआ था, I'll just tell you one thing. जो एनसीबी का जो लास्ट अपडेट आया था, Mhm. लाइक आपने शायद 1-1.5 घंटे का शो किया था, एंड ऑन दैट डे आई हैव जॉइंड योर शो. And Yeah. I was going through, what you was telling and all, and eventually later people came and all. सबने अपना opinion रखा. I have gone through with that. I have listened to it properly. ये जो facts आप रखते हो या फिर आपके यहाँ पे people who joins, they represent the fact, it's very important. यही चीज, it makes people explain things so well. So that is why I'll tell you, if we say that social media is a very important platform, is a very influencing platform, same goes for platform like this kind of platform, which raise voices for all the ongoing issue. Just like as we are saying, our say awakening soul is a platform which is awakening, the nation rather. The topic which you have picked up today, that is also a very important one, Varun. So yeah, that is what I will tell you. Just keep continuing, keep going ahead. And one thing I like in yourself, that you don't limit yourself for a particular cause, right? You extend your boundaries and you raise voice for all these possible issues. Please go ahead like that. But on just one line, I would like to share experience. Can I just go ahead if you say Sure, yes? sure. Please. Yeah, I would like to say you thanks for one reason, because when I went for the Republic interview, uh, it was my first interview, but the rest people who went over there, when I entered in the studio, I saw they are ready with their pointers, everything. The in a piece of paper they have written their pointers and all they have highlighted, and you are allowed to take your papers in the studio. When they will ask questions, you are okay. So people have came with the papers and all. So मैं तो कुछ prepare करके नहीं गई थी, it was my first show. So Yeah. I thought कि सुबह में मैंने वरुण का show देखा था. I have some of the points in my mind, and in Twitter I am active. So जितना knowledge है, definitely I'll go ahead, I'll convey my thing. And your show was so helpful. It helped me instantly uh, to answer the questions instantly, whatever they said. Although the rest was very much prepared, I'm seeing people sitting beside me, handy with papers, handy with pointers and all. I don't have anything. मेरे पास वो आपका जो शो था, मैं ज्वाइन किया था मॉर्निंग पे, क्योंकि जब मैं ज्वाइन करती हूँ आई गो थ्रू विथ इट विथ फुल कंसंट्रेशन. अगर मैं नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी. इफ आई गो थ्रू, आई पुट माई कंसंट्रेशन कंप्लीटली इनटू इट. तो Right. मेरे पास आपका शो था जो मैं मॉर्निंग में ज्वाइन किया था, एंड द ट्वीट, सम ऑफ द ट्वीट्स. सो इट हेल्प मी अ लॉट, टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इंस्टेंटली. सो वही मैं बार बार बोलती हूँ, यही इम्पोर्टेंस होता है ऐसे लाइव शो का. And I'll request people always come, speak, exchange your opinion. It helps a lot.
No, So abs- yeah, this is the things I wanted to convey. Yeah, just you just keep continuing, the way you are working, Varun, and sure. hopefully in future days also we will look forward you to bring some of more the important issue, and we can get a scope to speak about it. Thank you. Absolutely. Thank you. Thank you so much. This was really very inspirational. Thank you again, Chitali. And I always tell you, you inspire a lot of us, and you continue to do that as well. So thank you so much for your words. And so again, एक बार मैं वही बोलूंगा, what Chitali said, I'm gonna kind of re-emphasize. It's very important for us to stick to the basics, stick to the right things, main topic, main issues, and keep on bringing the facts out. Let's not continue on, okay, we don't like someone, so we will speak badly around those people. But all I can say is, if somebody is doing wrong, चाहे वो सुशांत से related case हो, चाहे वो कोई और topic हो, I think it's very important that we stand for the facts, we stand for truth, and we continue to motivate each other. Because end of the day, सुशांत के साथ जो हुआ, वो एक ऐसी ही चीज का नतीजा था जहां पर सुशांत, being the most talented in the industry, was being आइसोलेट हो रहा था, उसको आइसोलेट कर रहे थे सब लोग, उसको सपोर्ट नहीं दे रहे थे. And he was not bad mouthing anyone, he was not saying bad things about anyone, he was just focused on his work. अगर हमने पहले उन हिंट्स को, उन चीज़ों को समझ लिया होता, शायद आज हम सुशांत की जस्टिस की फाइट ना लड़ रहे होते, बल्कि सुशांत को, उसकी मूवीज को इंजॉय कर रहे होते. बट I think everything happens for a reason. So we let's get our thoughts together. Let's get our the right feelings together, and let's keep on talking about the things that matter to us, that matter to our community, that matter to our future generations, and let's save our future generations from the drugs, the Bollywood, the cabal, the money aspect, and trafficking and whatnot that is impacting our community. So thank you once again, Jatali, and thank you everyone for instilling that faith and confidence and showing me the support. Many people, बहुत सारे लोग हैं जो front पे नहीं होते, they still message me, call me, and I am really grateful to all of you. And let's continue doing this together, because I alone cannot do it, Chatali alone cannot do it, nobody can do it alone. And let's do it together, and expose people who are doing wrong, and stand with people who really need to be appreciated, who deserve all the appreciation and accolades. So thank you so much. Thanks everyone. Take care. God bless. Good night. And I will see you guys very soon again. And let's keep on talking about Sushant Singh Rajput. Keep on supporting Sushant's family, and keep on inspiring each other. जैसे अभी Chetali came here to inspire, to motivate me, to motivate others. Let's keep on motivating and inspiring each other. Let's have more meaningful spaces. I was part of another space like summer. There's this handle, Storm Chasers. They do amazing spaces. SSR Warriors, another amazing channel. I'm a big fan of SSR Warriors channel. They bring up all those topics. Of course, Kridha Productions, Yash, Dubai Tamizan channel. I mean, there are amazing channels which are doing amazing work. Let's continue to support each other. Let's continue to speak more about these topics, and let's continue to. I'll never knew him, but after me, she has left Bollywood. I'm proud of her. Okay, that's good to know. Thank you so much, everyone. Hello and namaskar. एक बार फिर से सबको खंबा घनी अयोबे भाई. Namaskar, Akash Virji, Tarana ji, and everyone else. Shalit, thank you, Judy. Good night, everyone, and we'll talk soon. Thank you so much. Bye bye.